Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, in this lecture today, we'll discuss about the RNAs. So, we'll discuss specifically about the characteristics of the characteristic structure of the transfer RNA. In the previous video, we have discussed about the specifically about the messenger RNA. So, this transfer RNA basically are known as the smallest of the three major types of the RNAs. I have told you in the previous lecture that the three particular major types of the RNAs, जिसमें ribosomal RNA, transfer RNA, and messenger RNA, these are basically involved in the synthesis of the proteins. So among those, these transfer RNA are the smallest of the RNAs, and there is at least one specific type of the transfer RNA molecule for each of the 20 amino acids that are present in the proteins. Okay, and you know that normally there is a number of amino acids is more than 100, but the number of amino acids that are involved for this synthesis of the proteins are 20. So there is for each amino acid used for this synthesis of the protein, there is a specific transfer RNA that is required. So this RNA, basically transfer RNA, makes up about the 15% of the total RNA in the cell. इसके अलावा these RNAs are also known as the soluble RNAs because they have a specific characteristic that these RNAs get dissolved in the 1 molar solution of the sodium chloride, and other normally RNA are the single stranded, but this RNA basically have adopted the shape of the clover leaf because of the specific intra-chain base pairing in its structure that we'll explain later. And it is also known as the adopter molecule, and its function is to recognize the genetic code sequence that is present on the messenger RNA molecule. उसके बाद it will proceed with the addition of the amino acids for the synthesis of the protein. So let's discuss its main structure. So this transfer RNA molecule basically it contains the almost from the range between the 71 to 80 nucleotides. So most of the times it is containing the 75 nucleotides. ठीक है? So the structure of RNA is shown here. As you can see that this transfer RNA is mainly consisting of the four loops or four arms. These are the acceptor arm, and this particular arm at its uh, this is this is the acceptor arm, and this one is the T5 C arm, and this is the D arm, and next is the anticodon arm. So these are the four arms. So if we talk about their functions, here you can see that it has adopted the shape of the clover leaf. So यहाँ पर ये हमें डबल स्टैंडर्ड लग रहा है. ये ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्मली जो आरएनएस होते हैं ये क्या होते हैं? ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन इस आरएनए की अपने ही स्ट्रैंड में जो बेसिस हैं उनके दरमियान में बॉन्डिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं दिस इज द इंट्रा चेन बेस पेयरिंग. ठीक है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट रीजन्स पे ऐसे शो हो रहा होता है जैसा कि ये डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल. इट इज बेसिकली द बेस पेयरिंग जो कि एक ही स्ट्रैंड में हो रही है. सो नॉर्मली इट इज दैट्स व्हाई इट हैज अडॉप्टेड द शेप ऑफ अ क्लोवर मॉलिक्यूल. ठीक है, सो दिस इज इट्स एक्सेप्टर आर्म. और इस आर्म को अगर देखें इट हैज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस यहाँ पर CCA. दिस सीक्वेंस इज बेसिकली फ्रॉम द 5 प्राइम एंड
to the 3 prime end. As you can see here that this is the 5 prime end of the transfer RNA, and this is the 3 prime end of the transfer RNA. So you can say that ये 3 prime end पर it is specifically capped with this particular sequence of the 3 nucleotides. These are the CCA, that is cytosine, cytosine, and the adenine. So it is basically serve as the site for the attachment of the amino acids. जो amino acids होते हैं जिनको ये recognize करता है, they basically attached to the acceptor arm. और इसके ये इस क्या करेगा, यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, फिर ये अमाइनो एसिड ये ट्रांसफर आरएनए इन अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करके उस स्पेसिफिक साइट पे ट्रांसफर करेगा। जैसा कि इसके नेम से ही ये शो हो रहा है कि ट्रांसफर आरएनएस आर बेसिकली यूज्ड to transfer the amino acids to the site of the protein synthesis। के साइटोप्लाज्म में जिस जगह पर प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है with the help of the ribosomal RNA and the ribosomes, तो उस साइट पर ये अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करेगा। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज द ट्रांसफर आरएनए। सो ये जो एक्सेप्टर आर्म है, इस जगह पर जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड होंगे वो आके अटैच होंगे, और इसकी ऑपोजिट साइड पे जो आर्म है उसको हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, दिस इज द एंटीकोडॉन आर्म। अब ये एंटीकोडॉन आर्म इसको हम क्यों कह रहे हैं, बेसिकली ये क्या करेगा, इस एंटीकोडॉन आर्म पे जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे जिनको हम कहते हैं दीज आर दी एंटीकोडॉन्स, और ये बेसिकली क्या करेंगी, दीज आर गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रिपलेट कोडॉन ऑफ द मैसेंजर आरएनए। यू कैन सी दैट दिस इज द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये हमारे पास पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए है। इस पे लेट्स से कि इसका जो एक कोडॉन है, that is the AUG। This is normally the stop codon, जो जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि मेच्योर मैसेंजर आरएनए पे एक स्टॉप कोडॉन होता है और आगे फिर स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। सो इस कोडॉन के अगेंस्ट जो है इसका ये एंटी कोडॉन आर्म, ठीक है, ये ड्यू टू द कॉम्प्ली ये इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब किस सीक्वेंस को, जो पर्टिकुलर सीक्वेंस 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ऑन प्रेजेंट ऑन दी मैसेंजर आरएनए, इस सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करेगा, और इसमें ये बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग की वजह से ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्सेप्ट दिस एंटीकोडॉन आर्म इज टू रिकॉग्नाइज द ट्रिपलेट कोडॉन ऑफ द मैसेंजर आरएनए। उसके अगेंस्ट ये 3 जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन ऑफ द मैसेंजर आरएनए, उसको हम क्या कह रहे हैं, दीज आर द एंटीकोडॉन। अब क्या हुआ, जो सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट थी 3 न्यूक्लियोटाइड का, उसको हम कह रहे हैं दीज आर द कोडॉन्स, जो कि किसको कोड कर रहे हैं, दैट बेसिकली कोडिंग फॉर द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। ठीक है, जो मैसेंजर आरएनए पे सीक्वेंस है 3 न्यूक्लियोटाइड का, उसको हम एक कोडॉन कह रहे हैं, और वो पर्टिकुलर कोडॉन जो है एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, और इसके अगेंस्ट जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडॉन आर्म पे, उन 3 न्यूक्लियोटाइड्स को जो कि ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडॉन आर्म पर प्रेजेंट है, उसको हम कह रहे हैं दीज आर दी एंटीकोडॉन्स, एंड दीज आर बेसिकली द कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन ऑन द प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, सो दिस जो एंटीकोडॉन आर्म है, इट बेसिकली विल इट विल रिकॉग्नाइज द ट्रिपलेट कोडॉन ऑफ द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, एंड बोथ these codon and anticodons, these are the complementary to each other। and next is the this D arm। ये बेसिकली जो डी आर्म है, जो डी लूप है, दिस इज नेम्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम मॉडिफाइड बेसिस, दैट इज द डाईहाइड्रो यूरिडीन इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, सो इस वजह से इसको हम कह रहे हैं दिस इज द डी लूप। बेसिकली जो ट्रांसफर आरएनए है इसमें देर इज द हाईएस्ट परसेंट ऑफ द मॉडिफाइड बेसिस, इसमें इन द फॉर्म ऑफ जैसा कि अभी बताया डी लूप में डाईहाइड्रोयूरेसिल है। इसके अलावा ये T5C लूप में वी हैव
यूरिडीन है जिसको हम सूडो यूरिडीन कह रहे हैं, ठीक है। एंड इस वजह से this is we can say that this particular type of the transfer RNA is containing the highest percentage of the modified bases. So this particular arm इसमें जो एक ये pseudo uridine है, it is containing the sequence of the T and then sequence of the C, and again this central portion जिसको हम कह रहे हैं, this is the pseudo uridine, ठीक है। Now, this particular variable arm, ये normally transfer RNAs में variable होता है, और इनकी basis पर जो transfer RNA है, they are classified into the two classes, जिसको हम class 1 RNAs कहते हैं और एक को हम कहते हैं class 2 RNAs। और जो class 1 RNA है, that is the most that is the basically abundant class, almost 75% of the transfer RNA are of the class 1. It is the most, you can say, it is the predominant. Okay, so this particular variable loop is classified into two classes, transfer RNA class 1 and class 2. सो नॉर्मली व्हाट हैपन्स कि ये जितने भी ये जो ट्रांसफर आरएनए है, इसमें जैसा कि मैंने बताया कि दे हैव अडॉप्टेड द शेप ऑफ द क्लोवर लीफ। तो ये किस वजह से है, ये बेसिकली इसकी जो आर्म्स में इसकी जो स्ट्रैंड्स में जो इंट्रा चेन बेस पेयरिंग है, ये उसकी वजह से है। सो नॉर्मली अगर हम देखें एक्सेप्टर आर्म में देर आर 7 base pair that are present in the acceptor arm. Let me write here the 7 base pair are present in the acceptor arm. These are they will form the covalent bonds between the its own strand, ठीक है, and these are 5 strands here in this T5 C loop. So 5 base pairs are present here, and D loop में there are 4 base pairs. So 4 base pairs are present for the D loop, and again in the anticodon arm में again we have 5 base pair, ठीक है। So this specific structure of the transfer RNA, this because of its इंट्रा चेन बेस पेयरिंग के, जो कि एक्चुअल में इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, लेकिन इसी सिंगल स्ट्रैंड की जो फोल्डिंग की वजह से इसने एक स्पेसिफिक शेप अडॉप्ट की है, जिसको हम क्लोरल रीफ कह रहे हैं। और ये किस वजह से है, ड्यू टू दिस इंट्रा चेन बेस पेयरिंग की वजह से इसको हम कह रहे हैं। So these, as I have already told you, okay, these transfer RNAs molecules contain high percentage of the modified bases. For example, dihydrouracil, pseudouridine, ठीक है, and यही जो इनकी एक्सटेंसिव जो कह लें इंट्राचेन बेस पेयरिंग है, इसी की वजह से इनका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है, जो कि क्लोरल रीफ स्ट्रक्चर है, इट इज बेसिकली द सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर दिस ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। एंड इसी का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो भी बिकॉज ऑफ दिस इंट्राचेन बेस पेयरिंग की वजह से है। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर ट्रांसफर आरएनए एक स्पेसिफिक होता है फॉर द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। सो इस वजह से इस ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, इट आल्सो सर्व एज एन एडॉप्टर मॉलिक्यूल, जिसका क्या पर्पस होता है, दैट बेसिकली कैरीज द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स जो कि कोवलेंटली आके अटैच हो जाते हैं एट इट्स 3' एंड, ठीक है। क्योंकि जो कि मैंने आपको बताया था कि दिस इज द अटैचमेंट फॉर द अटैचमेंट साइट फॉर द अमाइनो एसिड्स। As here you can see, this is 3 at 3' end, this is the attachment site for the amino acids। तो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो आके इसके 3' end पर कोवलेंटली अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इट विल रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर कोड सीक्वेंस दैट वाज प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए, एंड जो क्या करेगी, दैट विल प्रोसीड और स्पेसिफाइज द एडिशन ऑफ द पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स टू द ग्रोइंग polypeptide chain of the amino acids. So this is all about the
today's topic. So in this topic, we have discussed extensively about the transfer RNA molecule, its specific structural characteristics. We have talked about their its loops, its arms, its base pairing. So if you like the lecture, then don't forget to subscribe my channel and like the video. Thank you very much and good luck. Best wishes for all.